जय हिंद, जय भारत, and welcome to Dev Talks. This is Aadi स्पेशल वीकली फीचर सैटरडे से हटके आज जनरल नारायण को पकड़ के लेके आए हैं हमको थोड़ा समझाने के लिए। देखिए यार, मिलिट्री ऑपरेशंस है। अब तो हम जियो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन मिलिट्री ऑपरेशंस में इजराइल का क्या प्लान है इसके बारे में तो एक सर ही बता सकते हैं हमको क्या हो रहा है अंदर। माइडन साहब क्या बोल के गए नेतन्याहू को? क्या ग्रीन लाइट मिल गई है कि येलो लाइट पे खड़ा हुआ है नेतन्याहू? बारिश बंद हो गई है कि नहीं, उसके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। एंड व्हाट इज द बैटल प्लान ऑफ इजराइल? सर नमस्कार, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द शो। नमस्कार, जय भारती। यस, इट्स अ क्रूशियल पीरियड एंड सब वही बातचीत चल रही है सब तरफ की, घुसे क्यों नहीं। सो आई स्टेप बैक, आई वोंट गो एट द टैक्टिकल लेवल की क्या करना है। सो वी विल लुक एट फ्रॉम द व्हेन अ नेशन गोस डिसाइड्स टू गो टू वॉर, there are certain geopolitical and geostrategic factors that it needs to consider. Then based on that, it lays down its political aims and informs the military what they are supposed to do, from which the military generates its military objectives. Based on that, the next stage is you strategize, karna kya hai, and ऑब्जेक्टिव क्या है? inform your commanders below how you plan to fight. It's a tri-service, multi-service domain. It's a multi-domain warfare. Then when you tell your commanders below, then comes the ऑपरेशनल फैक्टर्स। तो वहां तक आपको मैं क्या क्या बातें होती हैं वो समझा दूंगा, सो दैट वेन एवर पीपल सम एक्सपर्ट्स टॉक, आई डोंट से एवरीबडी इज एन एक्सपर्ट, सम एक्सपर्ट्स वुड टॉक अबाउट इट, आपको समझ में आ जाएगा कि वो बोल क्या ओके। कि बोल क्या। सो सबसे पहले स्लाइड्स वगैरह नहीं है। व्हाट आर द जियोपॉलिटिकल एंड जियोस्ट्रेटेजिक कंस्ट्रेंट्स इन विच इजराइल हैज टू गो ऑन द ऑफेंसिव। लड़ने तो जाना है। तो सबसे पहले द बिगेस्ट फाइट जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का है, you find that the extreme leftists and the Islamists have tremendous ecosystem and echo chambers in the जी Anglo-Saxon country and in Europe. और खुल के आ रहा है। One of the places, Harvard, UK में तो वो तो किसका वो था, आई थिंक वन ऑफ द किंग्स स्टैचू, उसके ऊपर तो द ड्रिप्ड पैलेस्टीनियन फ्लैग। पैलेस्टीनियन फ्लैग। पुलिस खड़ी देख रही है। सर कल रात को कैपिटल के अंदर घुस गए लोग, यूएस या कैपिटल के अंदर। दे वर इनसाइड द कैपिटल। बट जनवरी 6 का जो ट्रंप का किया था तो हो हल्ला हुआ था, इसका तो कोई हो हल्ला नहीं हो रहा। 20 एंड साल देन जेल में वो डाल दिया था हम लोगों को। क्लासिक केस ऑफ द हॉस्पिटल का जो इंसिडेंट हुआ था गाजा में, आधे घंटे के अंदर सारे प्रैटल करने लगे, इजराइल ने मारा, 500 मरे, 600 मरे, 800 मरे, हाई मर गए। पता चला कि उन्हीं के रॉकेट एक गिरा है, और वो भी कार पार्क में गिरा है। पता भी नहीं बंदे मरे हैं कि नहीं, वो भी कार पार्क का एक छोटा सा हिस्सा ही फटा है। This is the kind of echo chamber on which he has to fight, and they which gives out that they have their echo chambers in media, politics, universities, intelligentsia, the think tanks, सब निकल के आ रहे हैं। All the worms are coming out of the woodwork and shouting. He has to also consider what would be the response within the Arab and the Islamic world Most importantly, when he is going, because he is living there. And here he has to look at two distinct things, the leaders and the public. You find there is a disconnect. While the leaders may be going in a particular direction, they have not taken care of de-radicalization as yet. And you still look at the public is going along with Hamas. So that is the other aspect that he has to take. The most important, since the civilians have not moved out, Hamas is not permitting them to move out, how much collateral damage would be acceptable? When he goes in, there will be civilian casualties.
Yeah. Let us disabuse ourselves of the fact that they will be. No, they will be. Whether it is through Israeli action, or because moment war takes place, the civilians flee. Whether it is through Israeli action or through the Hamas action. हमास ने भी अगर मारा होगा लड़ाई के दौरान, तो वो बोलेगा ही बोलेगा अपने इको चेंबर के थ्रू कि भाई उसने मारा है, इसने मारा. ठीक है. So how much would be acceptable? That decision has to be taken, and that is what he would be discussing. He would have discussed with Biden, and now today with Rishi Sunak also. Sunak is there. Yeah. Okay. A hint he has given, Biden has given, aid, whatever he has promised, is only going through the south, not to the north and central. So there's no That's force an indicator. There. And they have twisted the arms of the Egyptians, and they have said it will go through it will be provided by the Egyptians. So the Egyptians are being held to ransom to make sure that it doesn't go to Hamas. Now that is interesting. हमास के थ्रू जाएगा तो इजिप्शियन ने देना है, तो इजिप्शियन ने नहीं किया है. अरब तुमको पहचानना चाहिए, because after all a lot of things were going through the underground tunnels from Rafah crossings, also from the Egyptian crossings, things which were being smuggled into Gaza, the weapons and all. So they would have known, that the Egyptian intelligence system would have known about it. Now they are being held to ransom. It has to go only to the people, not to Hamas. But how do you know that the people are not with Hamas? $1 million question. Big. Then would he do a deal immediately before he attacks with the Palestinian Authority and declare it as a Palestinian state and start recognizing it and functioning along with it as yet? वो एक सेकंड सर, ये तो okay. Because Mahmoud Abbas has disassociated himself with Hamas and told that they are not Palestinians. हाँ. So now you make a deal with Mahmoud Abbas. Gaza का बाद में देखते हैं. ये एरिया तेरा स्टेट है. We declare it as a Palestinian state, recognize it, let's exchange embassies. And let us say the Anglo-Saxons and the Europeans recognize that and say, okay, we are having diplomatic relations with you. What happens to Gaza? Hamas becomes an illegal, oh my God. Illegal occupier, right? And जो 2 state की आप बात कर रहे थे, वो हो गया 2 state. And you say East Jerusalem is your capital? That's a good option. No. Then ultimately at the end, whatever it be कि ये हो जाता है, what is the final status of Gaza that would generally be acceptable? To all. First to the Arab and the Muslim world, and then to the others. Status of Gaza. Gaza का क्या होना? It is from these, after these he has discussed with his people and the hierarchy and the others, that he is going to give the political aim based on which the military operations can take place. Wow. Because the objectives will be given. Right. Now you come to once the objectives have been given, ABC will discuss at the end what options are there, which will bring it out. So what are the military constraints at the strategic level? Let us be very clear. Fighting in built-up areas, other military people would also have told you, is not a simple thing. It consumes troops. It stops your flow. अगर कोई Second World War पड़ा है, the landmark battle which finally broke Germany's back was Stalingrad. That is the inflection point after which Germany was always on the defensive. They were pushed back. Stalingrad was fighting in built-up area. अब गाजा कोई छोटा गांव नहीं है, काफी बड़ा शहर है. Okay, and there are multiple built-up areas because it is very heavily, densely populated.
It's about 500-600 square kilometers, 51 kilometers long. At its widest is 11 miles wide, 11 kilometers wide. That's Gaza, the whole Gaza Strip. Where 5 to 700 meters square kilometers area hai, but population density is very heavy. If population density is heavy, implies that there are many other such chota bada built up areas apart from Rafah, Khan Yunus, Gaza. There are multiple areas. So what do? Do you reduce it to rubble? You reduce it to rubble. Rubble can be used by the militants for fighting. It gives you excellent cover. Rubble gives excellent cover for snipers. Now, to avoid that, apart from reducing it to rubble, are you going to use incendiary? Wow. You permit your troops to use incendiary so that it cannot be used. जलने से लोग डरेंगे. Most important, over this period of time from 2005 till date, they have made extensive network of tunnels. Big question, Hanji. Right? Do you have LiDAR and ground penetrating radar to pick up the network? I believe USA ने दिए हैं इनको. अब उसको भी तो आपको ट्रैक करके रखना है. Just bringing down the buildings doesn't solve your problem. जी. Okay. So can you go in without having the details, at least in your area, कि ये network कैसा है? How are you going to target it? What kind of, do you have the requisite fuel air explosive ammunitions available to target those areas? If you don't have stock, how much time will it take you to build up that stock? Okay. How are you going to manage your collateral damage? Hamas भाग गया, सिविलियन के कोलैटरल डैमेज है, उसको इवैक्यूएट आप किधर करोगे? अपने पास करोगे? कहां करोगे? कैसे करोगे? If I may, एक स्टेटमेंट आया था सर जब ये इजिप्शियन साहब सीसी साहब गए थे इधर पे, क्या नाम है, जर्मनी गए थे सर, एंड उन्होंने बोला कि व्हाई डजंट इजराइल एक्चुअली टेक देम इनटू द नाजा डेजर्ट फॉर सम टाइम, we'll kind of work this out. नेगेव Negev डेजर्ट में desert. क्या है? वही वो जो टेंट सिटी की Nothing. बात हुई थी ना, जो टेंट सिटी का एक वो जो चला था कि हम एक टेंट सिटी बना देंगे इनके लिए, तो इन्होंने बोला था आप साइनाई में मत करो, आप नेजेव में डालो. क्यों? Once you साइनाई clear में it, क्यों get नहीं them करो? back. अब वो that means जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ सर, that means there is an openness to move the population. Is that what, would you kind of agree to that? No, that will come separately. जी. After the operations are over. I'm saying as a military commander at the strategic level, these are things I have to cater for. Na? जो Hamas casualty हुआ है, do I kill him? Do I go with no prisoners? जो casualty है उसको किधर इवैक करूंगा? अपने पास लेके आऊंगा या कहीं और जाएगा? किधर जाएगा? जो सिविलियन कैजुअलिटी हुआ है उसको किधर लेके जाऊंगा? डेड को तो बाद में उठा लोगे आप, बट जो कैजुअलिटी हुआ है उसका क्या करोगे? मेडिकल. So that is what I'm talking of, managing the collateral damage, because it's the military which is there, nobody else. So it is that military commander, he has to take a call and then tell, and that is how the medical resources will get utilized. Then most important, based on what has the objective been given, how much of the Gaza is to be secured by him? Let us say political aim has been given, break the back of Hamas. So your objectives will come out from that. Now, how much of Gaza has to be secured that the Hamas's back is broken? Will just north suffice, north and central, or will it take over the entire lot? And that comes out from the chain of command, who's where, how. And how do you find out how the command and control structure of Gaza is spread out, of
Hamas is spread out within Gaza. किधर किधर है, कौन कौन है? What happens to your hostages? Are you ready to accept them as collateral damage? No word on that from Israel. कोई कुछ नहीं बोल रहा है इसके ऊपर. I think everybody is a little. Unlike Indians, where all the politicians would have made political mileage out of it. Yeah. Hi, मर गए, hi, मर गए, hi, मर गए. Right? Even the West, जिसके पकड़े गए चुप है, कोई आवाज नहीं कर रहा. Having considered what are the strategic issues, which are not simple, you come to the operational. अब कमांडर लेवल पे आ गए कि भाई आपको जाना है. You have been giving a lot of assistance to Ukraine. तेरे war reserves कितने बचे? How much time do you need to build it up? What is the assessment of resources needed versus objectives to be captured? आपको ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे अभी कि भी गाजा पकड़ना है, खान यूनुस पकड़ना है, ये करना है. नाउ यू हैव टू you phase your operation. What are the various objectives in between to reach Gaza? Okay ना, कि भाई what are the lines of operations? What are the avenues of approach? Not just land, sea, air, सब देखोगे आप. जी. Resources कितने हैं? Which are the immediate objectives? What are the initial objectives, intermediate objectives? Final objective आपको बताया हुआ है. Final objective, is it on the beach? आपको what kind of opposition are you meeting? What kind of resources are on each line of approach are you going to take? How many lines are you going to open up? 2, 3, 4? आपके हिसाब से इन द लेंथ जो है गाजा का 25 किलोमीटर है. 51 किलोमीटर में आप तीन फ्रंट, 3 लाइंस ऑफ ऑपरेशंस ले जा सकते हो आराम से. तो आप ले जाना चाहोगे? आपको उनको डिसाइड करना है ना. It is for the military commanders of Israel to decide. Over a length of 25, about 51 kilometers, about 2 to 3 major thrust lines. That is, I am talking of core level line of operation. That means each line of operation has about, you can say about 2 to 3, about 20 kilometers कम से कम तो दोगे. Built up area है, so you fight tight. ओपन डेजर्ट एरिया नहीं है कि आपको 80 किलोमीटर चाहिए, 90 किलोमीटर चाहिए. These are built up areas, so you fight tight. When I say fight tight, मतलब मुझे मेरे बगल वाला दिखना चाहिए. लड़ने जाते हो तो मेरा नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो उसका सम एलिमेंट मेरे को नजर आना चाहिए. So when you go through such built up area or restricted terrain area, then you fight, you instinctively you tend to fight tighter. नजदीक आते हो, खुल के नहीं जाओगे क्योंकि अलग अलग हो जाओगे. Okay, this is natural. Then like I said, ये जब तुम देते हो कि ये मेरे लाइंस हैं, ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो उसका टाइमिंग, फेजिंग, कितना समय लगेगा, कैसे फेज करूंगा, it is all contingent on how much resources, troops and other things have been given to you. Remember, there is, while nothing may come from the north or from the northeast, but some element has to be placed there to hold. Towards Lebanon, towards Syria, उसको नंगा तो नहीं कर सकते आप. अगर जॉर्डन के तरफ से भी कुछ निकल के आता है, some element from the fourth, something has to be there in the West Bank. वही है ना, सब इराक में जो हैं बैठे हुए हैं कर्ड्स फोर्स और ये लोग. तो you have to keep something with you ना. हाँ. उसके बाद आप जाओगे अंदर. करेक्ट. एंड उसके मुताबिक you will do your phasing and timings and other things. अच्छा ये कर दिया, अब नेक्स्ट ये उसके मुताबिक आपका प्लान बनेगा. Are you permitted to use remotely delivered mines and cluster bombs to protect your flanks and other things? So that flanks से नहीं आओ. और
areas so that he can't use those areas as for fighting. Apart from incendiary, I can also use cluster bombs and remotely delivered mines. Will it be Yikes. permitted? Will there be hue and cry in UN with the use of these? So these are things they have to consider, yeah, as a nation. They're going to face the brunt. And like I said, managing the casualties and the civilians. Strategic level में बता दिया है, बाकी को तो इसने करना है ना, जो commander on ground. So how much of what is the priority given to them, and how much of the medical resource from what he has can he dedicate for them? Then how do you manage their flow? Maybe some civilians may be going somewhere which might impede your movement. How are you going to impede their flow in that direction and diverted them to some other direction? Big point. War is not a simple thing. Yeah, I mean, I am kind of, honestly, my head is spinning around because It's not so none simple. of the analysts have spoken. कोई इस चीजों के बारे में बात ही नहीं कर रहा है कहीं पे. Right. लड़ लेते हैं, तोड़ देते हैं. वही है ना, Now, बात वही हो रही है. अब ये करने पर अभी ऑप्शंस लेने हैं, और सबसे पहले होता है, जो पहले भी बताता हूं मैं, व्हाट इज द नोशन ऑफ विक्ट्री. What is the notion of victory that Israel is going to accept? Big question. तो ऑप्शंस तो 3-4 ही हैं. एक है कि वो रिपीट करो जैसे हमने किया था पार्लियामेंट अटैक के बाद, कि भाई डिप्लॉय कर गए मगर अंदर गए नहीं. पराक्रम. और ये तो हमने तो बॉम्ब भी नहीं किया था, ये बॉम्ब वगैरह करते रहे. इज दैट, बट दैट इज द लॉस ऑफ फेस. I don't think the Israelis would like this. And I don't think Bibi will accept this, whatever the West may say. उसके बाद फिर आपके 3 ही ऑप्शंस रह जाते हैं. या तो नॉर्थ गाजा को सिक्योर करो, नॉर्थ एंड सेंट्रल को सिक्योर करो, या पूरा गाजा सिक्योर. यही 3 ऑप्शंस हैं इनके पास. ओके. And my reading is he is going to secure north and central, and the indicators are the southern will be tacitly told to be controlled by Egypt. After all, the money, aid, UN ka aid, sab kuch is coming through Egypt, and Egypt is to control that. So the indicator which is coming out is ye karne wala hai. But before he goes in, like I said, you have to take a call. How much of damage you have to do, kya karna hai, kya nahi karna hai, what happens to the people. Because all the complete Gaza cannot get occupied in South Gaza. So where do people go? Somewhere, some country will be given a shut-up call and told to take it in. And indicators are pointing towards Egypt. मेरे तरफ से किंग अब्दुल्ला ने तो मना किया है. वो तो बहुत दूर है ना जॉर्डन को तो भेजेंगे नहीं ना. जॉर्डन हैज ऑलरेडी सफर्ड ना. They had to evict them ना. 69-70 ब्लैक सितंबर. तो पाकिस्तान से भी ट्रूप्स आए थे, 25,000 मार लड़ाई लड़े थे. About 60,000 were killed here. Whoa. PLO के 60,000 people were killed, and Pakistan alone had killed 25,000. तभी उसके बाद फिर बचे कुचे जो बंगाल थे वो अराफात लेके वहां गया था. And imagine a man like this was given a peace prize for signing the Camp David Accord. Yeah. And Yitzhak Rabin had to pay with it for his life. Anyway, उसके बाद they tried it in Lebanon,
and धीरे धीरे बढ़ता गया, and then in 82 was when the attack went in. From one side Israelis went in, and from the other side the Hezbollah, unka Lebanese army and all these people had attacked, and they were big massacres and all. और वहां से फिर वो बोट वगैरह में निकल के quite a lot of them are now sitting in Gaza. तो ये वो बचे कुचे बंगाल हैं. That's why nobody wants to touch them. Now, apart from this, while this would have been discussed with Biden and अभी ऋषि सुनाक से भी, I think what would have been discussed also is how to neutralize the left and Islamist ecosystem and chambers during the war. एक साथ पूरा तो बंद कर नहीं पाओगे, थोड़ा टाइम लगेगा, but at least how to curb it and neutralize it for the period when the war is going, because there will be collateral damage. Yeah. Okay. Then Crown Council को मैसेज गया होगा, how do you stabilize West Asia? When this happens, West Asia there will be some degree of instability, because there are, I would say, radicalized fanatics still there in West Asia and North Africa. बहुत वाना में. So इसके स्टेबिलिटी के लिए क्या कर सकते हैं? Like an option may be given with the IMEC and other things, indicating to them what all benefits that WANA would get from IMEC. Economic benefits of diversification its economy from just a fossil fuel based economy. That's true. What all can be done? वो तो reorganization. Yeah. So that would be going on, and the major issue would be the time, total time. How long would Israel be permitted to continue its operations? That would dictate the pace and fury of attack. It can't be a long run one. It has to be a short, sharp one. 1 week, at best 2 weeks, at a pinch 3 weeks. उससे ज़्यादा पब्लिक एंगर को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. That means what you're saying, sir, and sorry, आपका thought process अगर मैं तोड़ रहा हूँ, you're talking about a blitzkrieg, basically. It won't exactly be a blitzkrieg. It is going to be a shock and awe. ब्लिट्सक्रीग में क्या है, वो फायर करते करते आप एडवांस कर रहे हो. शॉक एंड ऑ किया था ना, इनिशियल वाज जस्ट लेवलिंग एवरीथिंग एंड देन यू मूव्ड. Like if you look at shock and awe, what was done in that shock and awe? For 40 days they bombarded and leveled up everything of Iraq, and then they moved in. So now it's a multi-domain. Communications भी उड़ाएंगे, सब कुछ उड़ाएंगे. इंटरनेट तो वैसे ही बंद हो गया. इसी में that leads me to one, na, people talk of failure, this failure, that failure. Please understand, wokeism had started in Israel in a big way after the initial tenure of Netanyahu was over. You opened up the Gaza and permitted 20,000 people to come daily and work everywhere without even checking who the hell they were. They were all the overground workers of Hamas. What they were doing when they went back, nothing. सारा इंट उनका ह्यूमेंट से गया है, पर्ची से लिख के गया है. सारा प्लानिंग इनका अंडरग्राउंड टनल के अंदर पूरा सारा पर्ची से लिख के सारा कुछ हुआ है. जब कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ है, आपको क्या घंटा पता लगेगा यार, व्हेन यू गॉन ओनली टेक्नोलॉजी बेस्ड. ना कंप्यूटर यूज हुआ, ना लैपटॉप यूज हुआ, ना मोबाइल यूज हुआ, कुछ नहीं यूज हुआ. इट वाज अ 2 years total communication blackout. My analysis, Iran, Turkey, Pakistan, China, Qatar did not realize that
Hamas had done its deal already with the Islamic State. That's how they are permitting that Palestine Islamic Jihad to function with them. अब आईसिस के साथ आप जाओगे तो यही करेंगे वो लोग जो इन्होंने किया है. This was not part of the plan. Just imagine if they had attacked just from a distance, just bombarded the kibbutz, attacked the military post, captured the military people of Israelis and taken them as POW. Now when you respond, you would have had a response from Hezbollah, you would have had a response through Syria. Three-front war. Having done this kind of brutality, no sane person like Hezbollah or even anybody can side. बोल सकते हैं थोड़ा बहुत एक दो रॉकेट फायर कर देंगे, that's about all. Leaders of bulk of the Arab world don't like the Palestinians, so they are waiting, and especially the Hamas, they are very anti the Hamas, so they're just waiting that Israelis will kill them. Some people try to link it up with LTT. No, the whole situation was different in the sense Sri Lanka did not contribute anything to the global economy. Whereas West Asia, the entire globe depends on it for oil. And if it destabilizes, then just imagine what happens to the oil prices. So it's not a simple thing. So these are the issues at large, and that's why I said it cannot be a long drawn war. The fury will be, and the pace will be enormous. So for fury means a lot of ammunition expenditure. You have to build it up. कहाँ से आ रहा है? इजराइल खुद बना रहा है, अमेरिका दे रहा है, कौन कौन दे रहे हैं, अब वो देखना है. And that is why you find people correctly assessing that the Ukrainian war has taken a backseat. हाँ, वो तो सर वो तो गया, that is outside the discussion, but because all the weapons and ammunition इसको चाहिए ना. हाँ जी सर, मेरे को जो आपसे थोड़ा सा क्लैरिफाई करना है, आपने दो चीज बोली. एक तो शॉक एंड ऑ टाइप शॉर्ट ऑपरेशन आपने बात करी है सर. एक चीज जो नैरेटिव मैं सुन रहा हूँ, ये जो सो कॉल्ड इतने सारे एनालिस्ट हैं कि ओ कोई प्लान नहीं है इनका, they've not been able to come up with the objective, अभी तक they've not decided करना क्या है. Now I mean I have not worn a uniform, but मेरे को आर्मीज के बारे में एक चीज पता होती है कि प्लान हर चीज के होते हैं. आई वोंट बी सरप्राइज्ड इंडियन आर्मी के पास एक कोई प्लान होगा बीजिंग में कैसे अटैक करना है. प्लान होते हैं. I mean, I'm just kidding. I don't know, all but there, but plans are all I've there. given you the constraints. That's So why I how- gave you the geopolitical, geostrategic constraints, the strategic constraints. What are the operational constraints? Once you are able to take care of a large number of these constraints, you will go to war. नहीं तो लड़ाई जाके क्या बेसिर पैर मार के आ जाओगे, and the Hamas is back to its like what late Atal Bihari Vajpayee used to do. इस बार आर पार की लड़ाई होनी है आर पार की, बट आपको डिसाइड करके सोच समझ के करना है. अंडरग्राउंड टनल्स इतने बने हैं यार, आंख मीच के वहां जाके क्या करोगे फिर? आपको you don't go blind ना. There was a time when people used to go blind and you took your decision on the fly based on this situation that takes place. Not in a place like this now. So my question to you is that you have plans are there, okay? And I mean, I'm just kidding around by bringing up an example, but plans are there, sir. What would be the objective that they would set for themselves? Biden साहब के साथ जो डिस्कशन में बाइडन ने खुद ने बोला, आई एम गोइंग टू आस्क देम सम टफ क्वेश्चंस, व्हिच इज व्हाट एवरीबॉडी एक्सपेक्ट्स कि भाई पूछा होगा तुम्हारा प्लान क्या है भाई, अंदर घुसोगे उसके बाद तुम बाहर आ रहे हो कि वहीं पे खड़े रहोगे. What is your plan? Logistics, this, that, because I mean, for me, the logistical value is very, very critical because I mean, going back to Omar Bradley, who had said that there are people who discuss tactics and then there are warriors who discuss logistics. So, what is the logistical plan? I gave you the complete logistics chain, your reserves, everything, unless you have built it up and planned it. And as far as I consider,
Gaza and towards the north is going to be leveled. I don't think it will ever get habited in the near future. Near term में तो नहीं होगा, near to medium term. वो तो level कर देंगे. Gaza is their hub. Bigger question is central, which comes to Khan Yunis. What is the future of Khan Yunis? Khan Yunis is a big thing. But sir, ये जो अभी ये Biden के साथ, what do you think is the likely this thing? Now, you've given us the military operations, sir. आज मैं सुन रहा Biden था. का, see, the whole military has come out from what the statement Biden had made, and from where the aid goes and who's responsible for pushing the aid inside. ठीक है. From the south, and Egypt responsible. In the sense indicating that Egypt is going to be responsible for south apna Gaza. That leaves the future of north and central in Israeli hand. So like I said, Gaza to jayega, because it is, whatever it be, it is a symbolic thing that attacks came from Gaza. So Gaza will go. If Gaza goes, matlab north of the Gaza Strip, I don't think will be left habitable by them. It will be rubble. What is the degree of destruction which would be acceptable in central? How much degree of destruction would be acceptable in Khan Yunis? Khan Yunis central mein aa jata hai. It's a little towards the south and central. Will Khan Yunis be part of Rafah and south? These are the things that would have been discussed. Gaza to level hona, wo to pakka. Itna to, that is my assessment, ki Gaza and north is going to be leveled up totally so that nobody can come there. And that is where I said cluster bombs and remotely delivered mines so that people don't dare come there after that. Let me ask you this, sir. Is there an appetite for ground invasion this time? That is point number one. Point number two is there not in Israel and USA in the West, within the Middle East, sir, ये जो अरब कंट्रीज हैं जो अभी इस टाइम पे देख रही हैं उधर, यार हमने सोचे तो बहुत बड़े बड़े थे, और काफी लोग आजकल बोलते भी हैं डी रेडिकलाइजेशन पे बात होनी है, ये होना है, वो होना है. I don't think it is absolutely realistic right now. Kabhi hoga. This is a process that is started already, but it will take its time. It's not a 5-year thing. It will take 2 generations before that thought process kind of goes off. Is there another way which is non-kinetic on the ground, sir? Because I was listening to Vivek Ramaswamy, sir. If you got to break the back of Hamas, you got to go in physically. You got to go in. मैं Vivek Ramaswamy को सुन रहा था, sir. And heart of hearts, a lot of Arab and Muslim leaders want Hamas to be eradicated. Nobody thinks the same way for Hezbollah. Correct. It is because of, it is, their hatred for that is similar to that of ISIS. Because Islamic State ke saath Hamas has made its bed, and the actions speak louder than words. This is the way Islamic State has also been functioning. So the hatred for Islamic State amongst the bulk of the Arab leaders is there. Okay, so Hamas को अगर खत्म ही करना है, तो this is the option. Otherwise, Israel loses face. नहीं, वो ठीक है, मैं समझ गया. My question, larger question to you is, I understand the leadership in the Middle East want to, get rid of this problem, and ye काफी time से this has been festering. It creates issues for them. None of them want to take these people also. I mean, हम लोग offline discuss कर रहे थे. None of them actually believe that they are Arabs in the first place. तो वो तो, I mean, what does one say to that? मेरा जो question है, sir, I was listening to Vivek Ramaswamy, and he put up this thing that, यार, the US arms reserves and this and that are pretty low. We've been trying to fight in Ukraine, and वो अभी नहीं है हमारे पास structure की this thing. So logistics पे वही बात आती है. So Piers Morgan asked him, and he said, यार, आपके हिसाब से, if you were the president, what would you tell Netanyahu? He says, see, okay, you keep bombing, don't go inside. I would rather say that you pick out the top 100 of the Hamas and take them out as a symbolic this thing, and then you see where the situation and go forward.
Now, realistically speaking, sir, when the US is इनकी जो हालत है in terms of ammunition and this and that, do you think that they would kind of go into this, and do they have a, अब उनके पास एक वो होता है ना, डिफेंस में वो कुछ लगा देते हैं, डिफेंस लॉ लगा देते हैं, and they can increase the productions really really fast. So how do you think this is going to go forward politically within for the US and this particular game of logistic supplies and stuff like that, sir? Wonderful. Vivek Ramaswamy said you knock off 100 top. Where are those 100 top people? अब वही, that's the big question. Right. The topmost one is sitting in Qatar. Qatar. How do you take him out? Have you put pressure on Qatar? What has US been doing? What has Vivek Ramaswamy been doing? Yep. Why is there not put? बोलने के लिए बड़ा आसान है. Bulk of the hierarchy, except for lower level flunkies who may be going right left, उसपे 8-10 मार दिए हैं, would have gone underground into the tunnels. उनके तो सब सर्वाइवल वहां बना हुआ है, वो बाहर क्यों निकलेगा अभी? उसीलिए मैंने बोला था कि वो GPR, that is ground penetrating radar, LiDAR, ये सारा कुछ चाहिए to track out how the tunnel is laid out and your weapons to take it out. Those weapons have not been, those ammunition have not been given to Ukraine. तभी तो चाहिए थे सर मेरे को आप ये बात करने के लिए. Those weapons have not been given to Ukraine. ना That's why I wanted you to talk about it. RT का ammunition तो इनके पास भी है यार, ये बना लेगा, इसके बंदे भी बना लेंगे यार. हाँ, क्योंकि जो पूरा डिस्कशन है अमेरिका में इज ऑन द 155 मिलीमीटर. नाउ यार इजराइल के पास अपना भी होगा. से तुम टनल को कैसे उड़ाओगे यार? और 155 ये काफी बना लेंगे यार. जरूरत पड़ी तो इंडिया भी भेज देगा उसको. राइट, जरूरत पड़ी तो इंडिया भी भेज देगा. अभी तक तो उसने यही बोला ना कि नहीं आपका सपोर्ट काफी है, हम मैनेज कर लेंगे. दैट इज व्हाट ही हैज सेड. अदरवाइज वी आल्सो हैव 155 यार, हमारे भी एम्यूनिशन 155 का बनता है. नो प्रॉब्लम. कारगिल वॉर में इतने सारे एम्यूनिशन उसने दिया था, हम भी दे सकते हैं उसको. देयर इज नो प्रॉब्लम ऑन दैट. इट इज दीज fuel air explosives, the GPRs, which is not required in Ukraine. Yeah? Guys, that's why you need a military mind. ठीक है, ये होती है मिलिट्री टैक्टिक्स जब आपको एक मिलिट्री माइंड से निकलता है बाहर. सर लास्ट क्वेश्चन मेरा, जो एक सवाल है आपसे कि आप इस पूरे सिचुएशन को देखिए, आप बोल रहे हैं कि एक शॉर्ट वॉर, एंड आई पर्सनली फील, अगर आप मेरे से पूछें सर पर्सनली, आई वुड से दैट शॉर्ट वॉर इज नीडेड. यू नो देयर आर टाइम्स व्हेन यू नीड टू गो टू वॉर, देयर इज नो अदर वे, बिकॉज एक लार्जर, आप देखिए इन द एस्पेक्ट ऑफ डी रेडिकलाइजेशन, अगर ये वॉर नहीं होगी सर, you know, when there is no collateral damage to the other side in terms of their infrastructure, their war making capability, वो तो फिर embolden होंगे. एंड कल का जो हॉस्पिटल अटैक हुआ है, whatever has happened yesterday, that tells you that इनकी अभी कमर नहीं टूटी है. ठीक है, there was a whole infrastructure, वो bodies लेके आए, ये करा, terrible thing to do, but they did all that stuff. That means their command and control is still intact. They are able to pull off these operations, and जो भी इनको बाहर से सपोर्ट कर रहा है, उनका कम्युनिकेशन ये वो सब कुछ अभी भी चल रहा है. So the escalation point is still there. तो सर अगले 2 हफ्ते में, या let's take a timeline. आप I'd recommend, मैं बोलना नहीं चाहूंगा सर timeline. Let me retract that 2 weeks का thing. What do you think would be the timeline, sir? कैसे आगे जाएगा? If you were the in charge, क्या करोगे आप? Next week 10 days, and it begins with a total whiteout over Gaza. I hope people understand the term whiteout. Whiteout means आपका कोई मोबाइल नेटवर्क, कोई नेटवर्क कुछ काम नहीं करेगा. बाहर से भी अंदर नहीं आ सकता, अंदर से भी बाहर नहीं जा सकता. टोटल वाइट आउट मीन्स ये इनके पास, अगर जो लोग कहते हैं कि हुआवे का ये सब है वो सब है, कुछ काम नहीं करेगा. ऑल योर सैटेलाइट सिग्नल्स विल आल्सो बी वाइप्ड आउट. नथिंग विल वर्क. फिर जाएंगे अंदर. एंड नॉर्थ तो होगा ही होगा, एंड द पोर्ट विल ऑल्सो बी डिस्ट्रॉयड. गाजा पोर्ट विल सीज टू एग्जिस्ट. ऑलरेडी फॉस्फोरस इंसेंडरीज तो डाल रखे हैं वहां पे उन्होंने. They'll just demolish the north completely. South, how far south they will go?
because they are wanting people to go down south. So central, how far south they will go? That is only a question mark in my pace. And for information warfare, जो I had been telling earlier is that point ना, जो बात किया होगा, how to neutralize The for liberal that West. period when the war is on, Yep. the echo chambers and ecosystems of the extreme कैसे left सीधे and Islams. What happens amazing. to Ilham Omar and that other lady also is there ना, क्या रहीम क्या नाम है उसका, आर नहीं से. नहीं तालिब करीब almost she was about in tears yesterday. Yeah, वो, so these two, Talib Rashid Talib something whatever. something R से नाम है. हाँ हाँ. How these two get neutralized? What happens to them? Howard is now on the Rashida Talib. firing line. Naveen, thank you so Pardon? much. Rashida Talib. Rashida. हाँ हाँ. How Howard gets neutralized and all these, your BBC and Okay. the New York Last Times, just imagine they say that because of that bombing thing, nikala nahi editor-in-chief. Who is that? A Muslim guy. उसको उड़ा दिया. उसको निकाल दिया. उसको क्यों निकाला? Editor-in-chief doesn't clear it, भाई साहब. Editor-in-chief only last minute में आता है ओवरऑल कि सारा कुछ हो गया, पॉलिसी ले डाउन करता है. It is that editor who has cleared the immediate. वो आता है ना, एडिटेड बाय सो एंड सो करके मीडिया में भी निकल के देता है. अगर कोई इमीडिएट ब्रेकिंग न्यूज आता है, किसने एडिट किया है, वो एडिटर को क्या हुआ? एडिटर को तो किया ही नहीं है आपने जी. तो एक स्केपगोट निकाल दिया. ओ हो, दुनियादारी चुप हो जाएगी, एडिटर इन चीफ को सैक कर दिया. एडिटर इन अरे चीफ सर तो वो पॉलिसी ड्राइव हेडलाइन करता है. हेडलाइन चेंज करते हैं तो खुले में. मेरे पास हेडलाइन तो दो वो एडिटर एग्जांपल्स हैं. करता है. नहीं नहीं रिस्पॉन्सिबल. पब्लिश होने के बाद. So एंड anyway, it is मेरे these जैसे things बदमाश. which will be mattering as to how people manage this, and that is what BB would have told Biden that you have, and ऋषि सुनक को भी बोल रहा होगा, आपने ये मैनेज करना है कि इनको न्यूट्रलाइज करना. इनका सॉर्ट आउट होना तो अगले 2-3 साल के अंदर सॉर्ट आउट होते रहेंगे, बट इमीडिएट ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन ही इज गोइंग इन, दिस हैज टू हैपन. And period before that, all their screaming and shouting has to go down. And कुछ नहीं, आप रिपोर्ट ही पब्लिश मत करो. Let's say there is a protest in let us say in Toronto, आप पब्लिश ही मत करो, सोशल मीडिया में डालने ही मत दो, खत्म. दुनियादारी को पता ही नहीं लगेगा तो आप बोलोगे कुछ हो ही नहीं रहा. Sir, but last That's how question. you उसके बाद neutralize. last question, then we go into the comments. Let's say अभी Israelis are preparing, sir, चीजें इकट्ठी कर रहे होंगे, ट्रेनिंग कर रहे होंगे, फाइनल प्लान्स ये वो जो भी है, commanders conferences will be happening, काफी कुछ हो रहा होगा उस जगह पे. मेरा एक और फ्लिप साइड में सवाल है, अगर आपको जाना है द बेटर इट इज कि आप जल्दी जाओ अंदर, स्टार्ट नहीं, करो, उसके बाद आप धीरे हो not जाना, वो अलग है. नहीं, not बिकॉज this way. कितना टाइम तक अगर आप मेमोरी में रहेगा नहीं, सर. अब मैंने बोला ना कि यू हैव टू सेलेक्ट योर लाइंस ऑफ ऑपरेशंस एंड द एवेन्यूज ऑफ अप्रोच. जगह तो उतना ही है. आपने अगर शुरू कर दिया तो ही कैन ग्रांट द एनिमी दैट मच आल्सो ना. आफ्टर ऑल, it is not Hamas which is planning. It will be the Iranians, Pakistanis, Turkish, Qataris and the Chinese who will be advising him. तो आपने अपने लाइंस ऑफ ऑपरेशन, एवेन्यूज ऑफ अप्रोच तो हाथ दिखा दिया ना, कहाँ कहाँ जाने वाले हो, लाइकली किधर जा सकते हो, अगर थोड़ा सा भी अंदर चले गए तो. देन व्हाट आर दे अभी जब वेटिंग फॉर जाओगे सर? फेंस बिकॉज जो तोड़ के जाओगे ना, एक पब्लिक परसेप्शन रहेगा, एक पेशेंस, एक जो एक्सेप्टेंस रहेगा कि हाँ यार अभी अभी तो ये हुआ है, अभी चले जाएं, वो कितना टाइम तक दे विल बी एबल टू होल्ड इट अप? मैं तो कह रहा हूँ विद इन द नेक्स्ट वीक 10 days they're going. Wow, that's what I wanted to know. That's my understanding. The next week 10 days, हफ्ता 10 दिन के अंदर वो चले जाएंगे अंदर. Honestly, I agree with you, sir, because एक जो अभी जो गरम है ना लोहा भी गर्म हमास है. की, जितना ज्यादा डिले करोगे, परसेप्शन चेंज हो जाएगा आपके. इवन विद इन इजराइल परसेप्शन चेंज हो जाएगा, एंड perception द change हो वोक्स जाएगा. विल स्टार्ट कमिंग अप. Yep, exactly. That's the point I was trying to make. Thank you so much, sir. I think
और बोलते हैं ना वेवलेंथ थोड़ी आपसे सीख गया हूं मैं, ठीक है। अच्छा guys, let's get into the questions. We've got almost 2000 people here on this nice Thursday Thank you, sir. afternoon. आपको सुनने के लिए तो सर I'm sure people will come. There is just no question. I'm never worried about a show with you. People always love to listen to you. Guys, thank you so much. आप लोग please इस वीडियो को like करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए. We've crossed by the way 88,000 subscribers हो गए हमारे, and आप बढ़ो लोगों ने बढ़ो टारगेट बढ़ो। सेट किया है दिवाली से पहले 1 लाख, तो चलिए आप करके दिखा दीजिए हमको तो अच्छा रहेगा. Only thing that you need to do is like the video. Yes, You can yes, contribute yes. directly towards me through the QR code up above, या फिर आप मेंबर्स बन सकते हैं, या फिर सुपर चैट्स या सुपर स्टिकर्स भी बेच सकते हैं. Let's get into the सवाल जवाब. Girly Miss Girly, thank you so much for becoming a member. Interesting name, I must say. Okay, Sandeep ji, thank you so much for your super sticker. Okay, George Soros is on the show, sir. भाई मेरे तू क्या कर रहा है यार? There is a saying in Hindi, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे. इतनी बुरी तरह से पिट गए तो कुछ तो बहाना करना चाहिए. Like saying it was looking at BCCI event. अबे गधे, इंडिया में हो रहा है इवेंट तो बीसीसीआई तो कंडक्ट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ आईसीसी. साला आईसीसी थोड़ी आके कंडक्ट कर रहा है इंडिया में. किस दुनिया में बैठे हो? इंडिया में होगा तो इंडियन क्राउड नहीं होंगे, तेरे पाकिस्तानी क्राउड होंगे. आएंगे बट वो तो कम रहेंगे. अगर 1 लाख नहीं, का सीटिंग है तो कितने आ जाएंगे? और वैसे ही 5 लोग, देश तेरा फक्कड़ है, पाकिस्तान का देश फक्कड़ है. कितनों के पास पैसे होंगे टिकट खरीदने के लिए? 5-6 सर होंगे नहीं. मैक्सिमम. नहीं चाहिए उससे ज्यादा हमको. ऑब्वियसली. अब वो तुम नमाज पिच पे पढ़ना शुरू करोगे तो वो तो जय श्री राम बोलेगा तेरे अगेंस्ट. किसने बोला नमाज पढ़ने के लिए? कोई क्रिकेट पिच नमाज पढ़ने की जगह है? पागल है यार वो लोग. नहीं, आप करो ऑब्वियसली अपने ड्रेसिंग रूम में, प्रेयर रूम्स हैं, सब कुछ है वहां पर, आराम से करिए. सब देयर इज कुछ नो प्रॉब्लम. अवेलेबल है. स्टेडियम में एंड तो इंडिया, सब प्रेयर रूम्स अवेलेबल है. जाइए करिए. See, भारत इज अ nobody सेक्युलर says anything when you score a century, then you go down, धरती को नमन करके उड़ जाते हो. लेकिन वहां बैट नीचे रख के अगर आप कलमा पढ़ने लगे, थैंक यू वेरी मच, दैट इज नॉट द प्लेस टू रीड योर कलमा. इवन टू डू आप एनी अपने अदर प्रेयर फॉर दैट मैटर. ड्रेसिंग रूम में जाके आप करो यार. आप या थैंक गॉड फॉर इट. दैट्स एवरीबॉडी या डज इट. कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई एवरीबॉडी इशू नहीं. डज इट यार. या आई मीन इट्स जस्ट तो मतलब अगली बार इफ इट इज ओके फॉर हिम टू डू हिज नमाज देयर, तो मैं एक पोर्टेबल अपना हवन का चीज ले आता हूँ, सेंचुरी बना देता हूँ. तो 2 मिनट के लिए मैं हवन का वहां पे पिच के ऊपर करके मैं हवन कर देता हूँ कि मैंने सेंचुरी बना दी. ये कोई चीज हुई यार क्या? द तो प्रॉब्लम वो इज तो सर, यही है, सियानी बिल्ली खंबा नोचे तो रो रहे हैं. ठीक है. प्रॉब्लम इज अभी स्पोर्ट्स में ना इतना वो कर रखा है ना, पॉलिटिसाइज हो गया है, रिलीजियसाइज हो गया है, व्हिच शुड नॉट बी द ओनली केस. इन द पाकिस्तान टीम, या नोवेयर एल्स. नोवेयर एल्स. इतनी बुरी हालत है इनके कंट्री की. The cricket team which when they won the match, they did not dedicate it to their people के यार हालत खस्ता है. Dedicating it to Palestinian. वो थूकते हैं तुम्हारे ऊपर, कहते हैं तुम वहीं रहो यार, हमको तुम्हारे कुछ नहीं चाहिए. अपने देश के बारे में तुमको चिंता नहीं है. Learn a lesson from Afghans. They come from a place which is even hardcore Islamists than you are, but yet, gentlemen, and they dedicated the victory for that earthquake and the people who are suffering from the earthquake. कुछ सीखो यार उनसे. उनको कभी देखा कलमा पढ़ते हुए? नहीं, बट अफगान का तो सर, आई मीन इफ तालिबान पार में नहीं होता, आई वुड हैव बीन प्राउड ऑफ दैट कंट्री ऑनेस्टली. No, जिस otherwise तरह से also वो, you look at the way the team is conducting themselves. They are also Muslims. You look at Bangladeshi teams, all said and done, whatever they're doing, they are also Muslim country only. Has anyone तो behaved like Pakistani की कलमा पढ़ने लगे, ये पढ़ने लगे, trying to मुस्लिम होने से, convert? अभी तो नहीं, इसका तो मुस्लिम होने वो से भी किसी नहीं को चल रहा. प्रॉब्लम थोड़ी है. अफगान भी इनका इस्लाम पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच हुआ था, और किसको, हाँ वन ऑफ देयर मेंडिस और हाँ समबडी हाँ को, हाँ. दैट चैप इज टेलिंग कन्वर्ट कर लो नहीं तो जहन्नुम में जाओगे. अबे क्रिकेट खेलने आया कि कन्वर्ट करने आया? दिस इज द रीजन व्हाई द प्रॉब्लम एग्जिस्ट.
और I mean, nobody has, अब we've got Muslim players है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आप करिए जो करना नहीं, है, there's अपना तो nothing wrong छोड़ो, with it. आई एम कंपेयरिंग देम विद अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश अफगानिस्तान है, यार, आउट अब वो एंड आउट मुस्लिम मुस्लिम कंट्रीज ही अच्छे से बिहेव करती कंट्रीज हैं। ही हैं, लुक एट देयर बिहेवियर, लुक एट दिस चैप्स बिहेवियर। वो क्यों इंडिविजुअल सर, प्लेयर्स के बीच में होता रहता है, दैट्स अ डिफरेंट इशू। वो तो दुबई में सबके मैचेस साथ नहीं हुए? होता है। दुबई में मैचेस नहीं हुए? हुए। ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक, नो प्रॉब्लम। ऐसे ही है ना वो सर, अब तो वो मिकी आर्थर भी वो अपनी जॉब बचाने कर रहा है ना। हाँ, व्हाट वाज दिस? thought provocator, thank you so much. He says, what if Israel simply floods the tunnels with seawater, forcing the rest of the rats to come out from hiding and also possibly destroying any ammo? Sir, this thing has been floating around online. मैं 2-3 लोगों को पहले भी बोल चुका हूँ, साहब मोटरें कहाँ से लगाओगे, पाइपें कहाँ से डालोगे? I mean, सी वाटर से फ्लड करना है, पहले आप लेआउट तो जान लो कि कहाँ है, कहाँ है? पानी कहाँ से लाओगे वहां तक। as it is they are crying कि हमको पीने का पानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, so you can't do that. So that's why the fuel air explosives and other things, they have to take a call how they are going to do the destruction of the tunnels. I don't need to destroy the whole tunnel, a portion of it from the entrance and then seal it up. तो अंदर जो भी है उसको रहने दो, एग्जिट सारा जिस जगह है एग्जिट सारा तोड़ के उसको सील कर दिया मैंने, जो अंदर है वो भूखा मरेगा यार। नहीं तो जो एमओ है उसको लेके वन ऑफ द एग्जिट्स उसको एक्सप्लोड करके निकलने की कोशिश करेगा। चॉइस इज हिज, whichever way he does, he dies. I mean, it's a good option, but little undoable. Nandakumar ji, thank you so much. Adi, do you expect China to use this global turmoil to intrude into Arunachal, which is posturing an attack on Taiwan? अरुणाचल में तो वो छुटपुट कुछ ना कुछ पहले भी मैंने बोला, यू हैव टू बी केयरफुल इन अरुणाचल। आई एम हैप्पी दैट द आर्मी इज नॉट पुट इट्स गार्ड डाउन, नॉर हैज द एयरफोर्स पुट इट्स गार्ड डाउन। काफी फ्लाइंग होता रहता है वहां पे, तो कोशिश करेगा, जूते पड़ के जाएगा तो इट इज लॉस ऑफ फेस फॉर हिम ओनली। डेविल्स एडवोकेट, सर आप तो जूते मारते हो चाइनीज को, बाय द वे मैंने हमेशा देखा है जब भी चाइनीज का कुछ आता है सर के हाथ में जूता जरूर होता है। बिल्कुल दैट्स बिल्कुल, पीटे थैंक यू हुए सो मच। मैंने अपने कमांड में यार, हिम्मत नहीं हुई उनको कुछ करने के लिए। उसके बाद लातों के भूत, मेरा तो क्लियर है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, थप्पड़ मार के जूते मार के निकालो, वो आएगा नहीं कभी, वो बंदा डरेगा, ऊपर से मैसेज भी आएगा, उसको याद रहेगा यार पिट के आया था मैं, दोबारा पिटूंगा। आई बिलीव गलवान में हुआ था ना, इन लोगों ने बोला था दोबारा जाओ, उसके लोकल कमांडर ने, पागल है मैं नहीं जा रहा वहां पर, आई एम नॉट गोइंग बैक। नो नो, once you thrash them nice and proper, nobody comes. सारे डेविल्स इंडियंस एडवोकेट, को पेंट मत करो यार डेविल्स एडवोकेट, वो गिने चुने हैं, नाम भी बता देंगे कौन है जो कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं यार। दे आर पार्ट ऑफ द एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट एंड इस्लामिस्ट, जिसको वोक ब्रिगेड बोलते हैं, दे आर पार्ट ऑफ दैट। बाकी इंडियंस नहीं कर रहे। you know, this is something that I want to say, don't paint everybody in the same brush, it doesn't, Everybody. ठीक है, मैं ये उस दिन भी बोला, देखिए nobody has a problem with Muslims, ऐसा कुछ नहीं है। the issue is there is a certain sect जो ऐसे करते हैं, अब उसका there is a problem there, ठीक है। so and it is acknowledged by a lot of people also, ऐसी बात नहीं है, वो अपने आप ही बोलते हैं यार ये ठीक नहीं है। तो don't paint everybody with the same brush, because a lot of them have been in the Indian Armed Forces. Abdul Kalam, I mean, there's so many people who've done brilliantly for the country. Thank Average you middle sir, class yes, gamer. Thank it's you so not so much. simple, because always remember, the senior-most person will take the call, and there will be casualties on both sides. He has to have a clean conscience that he has taken the decision in the best of interests. Otherwise, there will always be a guilt conscience and he may not be able to sleep well at night. The end of it is men to battle and they lose lives. Alpha Max, thank you. Americans call it Americans call it PTSD, post-traumatic stress disorder. It is not just the person who has faced the trauma, it is also the person who orchestrated it and a trauma took place. Alpha Max, thank you so much. He says Israel with advanced defense tech,
security leader is lagging in perception and narrative. Where does India stand today in the same situation? Alpha Max, this lagging of perception narrative warfare for the Israelis is because of the rise of wokeism within Israel and the rise of wokeism. Because wokeism was giving the money to the people. It is falling now. And the classic example is the leader of wokeism, George Soros, is shutting office and cutting his all over the world and cutting his workforce by about 40%. मतलब पैसे नहीं, तभी आप काटते हो, पैसे नहीं. Means whoever was giving him the money has stopped giving him the money. So whatever corpus he has, he is to start working from within his corpus. कोई extra नहीं आएगा. Extra रखेगा तो he'll start eating into his corpus. So the woke brigade, that's why अब धीरे 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 इसके बाद, if they are able to control them better, the Anglo-Saxons and the Europeans, you will find they'll go down. India तो has always been in this situation. आपकी सुनता कौन था? अब धीरे धीरे भारत का नैरेटिव आ रहा है. इंडिया की नहीं सुनते थे, अब भारत की सुनते. अब भारत का नैरेटिव निकल के आ रहा है. As India, you were nothing, yeah. So don't go back to India. Your Bharat, your narrative is coming. Your narrative is coming. That is why you can be strong and aggressive in your using smart power, as what you see your foreign minister doing. And people have to lump it and accept it. Abhishek Gautam, thank you so much. He has a funny question. What about doing Haval before and after the game? Don't take it too far. गेम है यार, मैं तो मजाक में बोल रहा था अभिषेक जी. गेम है यार, गेम को गेम ही रहने दो. क्या हवन ऐसे इट्स अ डू और डाई बैटल तुम्हारे लिए. जंग पे जा रहे हो तो अलग है यार. I mean, that's a different story. Proud Indian veteran, he says, Adi, media coverage is very poor, including CNN and BBC. अभी वहां पे वो हलचल हो रहा है ना, थप्पड़ पड़ने लगे हैं. People have started gunning for them because they didn't call Hamas the terrorists. Till now, they've not And called it. even now, but जूते पड़ने लगे हैं. So now they suddenly, and now that New York Times has sacked their editor-in-chief and apologized and categorically said that उसने ये किया था without doing their fact check. सारे डरे हुए. Who will be next? But like I said, लातों के भूत बातों से नहीं मानते. एक दो को लात पड़नी चाहिए वहां पे, पड़वानी है, फिर थोड़ा सुधरेंगे. मैं नहीं कहता कि पूरा सुधर जाएंगे. आफ्टर ऑल दे आर शोइंग द ट्रेट्स ऑफ कुत्ते की दुम. Anikesh Sab, he says, sir, I used to think internal security situation was volatile and friction, but EU for all aspects is gone. It's on a pile of gunpowder waiting for a spark to end its misery. Middle East is safe, EU is not. Is it? Why have they hesitated to use force? They have not used force. Are they so scared now that if I use force, what will happen? There also, I would not like to paint all in one color that all these refugees who have come there are same. Why do they hesitate to use force is the worry. Because if they don't use, then what you're saying will happen. तो जैसे जैसे आप एक दो चीज करते हो, कुछ नहीं होता है तो हिम्मत बढ़ता, कह रहे कुछ नहीं होता, फिर देन यू ट्राई टू ब्रिंग इन मोर पीपल जो हु आर द फेंस राइडर्स, वो भी आपके साथ आने लगते हैं, एंड इट गोज इनटू अ लार्जर स्फीयर. आदि, आई हैव लॉस्ट यू. So I'm quite surprised why the European countries have not used force as yet. Only Sweden, I think, did it, where they killed that one chap, but they ran into him in an eatery and he opened out his gun. And you see, yeah. My apologies, sir. Something just cracked up in my internet.
What I was saying is that I'm most concerned that EU has not yet used force. European Union has not yet. I won't say EU. I would say European nations. EU का जो parliament है वो तो defunct हो चुका है. They have made their bed with Hamas. So a lot of countries, people, the leaders have openly told them that you are nobody. You are not elected by us. Now, if EU uses force, things will change. Like Adi was saying, and I had told earlier also, don't paint everyone in the same brush. I won't paint all the refugees who have come into Europe in the same brush. But if you don't use force, Adi, I've lost you again. Vijay Kumar says, sir, can you share the links of books you referred to on geopolitics like Heartland, Prince, Sea Warfare, and Discourses? Because there are many books, I don't know which one to buy. हार्टलैंड तो नेट पे चले जाओ, आपका वो क्या है, what is the name of that chap यार, हार्टलैंड थ्योरी, मैकिंडर, वो उसका आपको पेपर्स मिल जाएंगे. हार्टलैंड 25 पेज थ्योरी का पेपर है वो, छोटा वाला पढ़ लो. पढ़ो, but after that he had refined it in 42 also. Yeah. So you can read that. Sea Warfare is Alfred Thayer, महान Sea Warfare. महान Sea Warfare, MAHAN, महान Sea Warfare कर दो, आपको मिल जाएगा. तो ये दो पढ़ लो तो बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे कि हाउ sea is utilized and how continental things are, what is critical, and then that can evolve. If you read the paper of 1904 में लिखा था and then 1942 में उसको रिवाइज किया था, you will understand the changes that took place and be able to apply the change in today's context. Alpha Max, thank you so much for your contribution. He says, thank you Major General Rajiv sir for your service. हम भारतीय आपके कृतज्ञ रहेंगे सर. Thank you sir. उसका तो कोई डाउट ही नहीं है साहब. Sam P, he says, please ask General Saab how we could organize security at the board level. Security forces, police may arrive too late. What should be the immediate response mechanism? I think this incident in Israel has scared a lot of people, so there's no question. No, I mean, Sam not of P, anything else, but I'm not into vigilantism. In the disturbed areas, we had started the village security groups and other things. So उनको हथियार वगैरह दे के रखते हैं, and they have the process to function, and they are linked to the military, directly to the military. So and the police and the military. So वो common उसमें चल जाता है. In cities and all, it's asking for trouble. The police, the government has home guards and your civil security forces. So I'm sure the NIA would be raising the risk levels and other things, and these people will come up. I'll give you an example of how it functions. My elder brother got married in 1984 in Hyderabad. It was on the day that Indira Gandhi was assassinated. We didn't know. शादी होने के बाद at the venue we suddenly found it was in the city. All the roads, छत पे गए थे हम लोग 8-10 रिश्तेदार. Suddenly we noticed every street, every lane, police in the garb of traffic police was out, and all they were doing, I'm sure home guard, civil police, सब थे. कोई रोड की मार्किंग कर रहा है, कोई बोर्ड को पेंट कर रहा है, ऑलरेडी पेंटेड. हमने कहा यार क्या है. Then after about an hour we got to know this had happened, and because of this response by the then NTR government, not a single incident took place in Hyderabad and Secunderabad. Not a single. So it's the will. It's the will. When you, at the governance level, you have the inputs, you can grade your security level, and then quietly deploy them.
डोंट गेट कैरिड अवे कि भी हमास वहां से हथियार लेके दौड़ के आ गया, ये हो गया वो हो गया, तो यहाँ पे भी कुछ हो जाए, इतना आसान नहीं है. बॉर्डर एरियाज, यस. सो when we talk of concern about these, we are essentially expressing concern of JNK, बॉर्डर. Northeast, these areas. Not एंड इफ आई मे ऐड even समथिंग सर विद Northeast योर. also border areas. जी. Manipur, Mizoram, Agartala, that is Tripura, Nagaland, South Arunachal, which are along the border where things can take place, take an ugly turn. विद योर परमिशन मे आई ऐड समथिंग सर. Yeah, गाइस, एक जो फियर साइकोसिस होती है ना, दैट्स अ वेरी डेंजरस थिंग. We've never had anything in this country of this sort. We don't have that kind of setup. आप इजराइल का एक सेटअप देखिए, वो अलग है. ठीक है, the kind of radicalization within that region is very different and it's very very high. आप इजराइल के नेबर्स में देखिए कौन है. नॉर्थ में सीरिया है, जहां पर कौन था, आइसिस. ठीक है, तो एक 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 सिचुएशन है, एक लोकेशन है, एक हिस्ट्री है. देयर इज अ होल लॉट देयर व्हिच कॉल्स फॉर दिस काइंड ऑफ स्टफ. भारत में ऐसा नहीं है. there's a whole lot of homogeneity still that exists in तो this land. इस So इसमें एक और ऐड करूंगा आपका. इसराइल में हुआ कहाँ था? साउथ इसराइल. व्हाई साउथ इसराइल? गाजा इज इन द साउथ ऑफ इसराइल. yeah, नॉर्थ में तो नहीं हुआ ना, सेंट्रल में तो नहीं हुआ ना. And you have Gaza, a disturbed area right next to it. That is how we are talking of the disturbed areas. That is Valley, Kashmir, जी. Northeast along the border. These are disturbed areas. You are seeing what is going on in Manipur. Yeah, see, Don't worry. Daro Manipur mat. is a prime example of Yeah. what sir is trying to say. Something similar is going on there. जी. And both Absolutely. sides are doing it, not one side. That's the sad part. That's the sad part. ठीक है. Maitri, she says, ask General sir, when can we accept a renaissance in movement in the Islamists? Is it too concentrated to disperse? Also, we are grateful for your knowledge. I use it in my academics as well. Thank you, Maitreji. Yes, that's what I said, that this could act as an inflection point. But inflection point doesn't mean it will change overnight. I related it to the Inquisition, and then where the people got sick and tired of it. It took almost about a century or two. The power of the church ultimately was neutralized to a large extent in the 30 Years' War in the 18th century. Where you find people who read IR, they talk of Treaty of Westphalia and nation state and this, that. Essentially, the battle was essentially to curb the power of king making of the Pope, to put it bluntly. And that ended it. And it kahan? From 16th century to 18th century. It doesn't happen overnight. Societal norms and changes don't happen overnight. It's gradual. So, Naveen, he says, General sir, can USA afford 3 wars, Russia, Middle East, and China? Russia deployed MiG-21 with Kinzhal missiles. What is your take on this? This is what Putin had said, sir. A lot of people are quoting this. Three front. Is US fighting? No, So not let us one not soldier. paint unnecessarily. Yeah, three front war. He's just giving weapons and getting somebody else killed. Yeah. Kinzhal missile, they are the ones who have the supersonic missile. Yeah. So why will he not use it? And he's been given an ideal now platform in Ukraine to test his weapons that he has Yeah. made. And Americans are also doing it. Test the weapons that they are making. Both sides are doing it. अटैक हम से वो ATAGS से फायर Americans कर रहे are हैं a ना bit अभी. scared. Long range उतना ज़्यादा देंगे नहीं, because it might go out of hand. Because I always talk of escalatory control matrix. Yeah. Okay, कि वॉर का एस्केलेशन उस मैट्रिक्स पे कंट्रोल रखो. तो इक्के दुक्के दे देंगे, ज्यादा यूक्रेन को लॉन्ग रेंज नहीं देंगे, शॉर्ट रेंज देंगे. दैट नहीं, उसका कर्व रेंज इज कम नॉट कर दिया देयर ना. विद. Pardon? रेंज कम कर दिया ना सर. 145 किलोमीटर कर दिया उसका. Now that limitation is not there with the Russians.
He'll जी test everything, yeah. Why not? मौका दिया है, करेगा. Like his fuel air explosives, the testing started in Afghanistan and it was perfected in Caucasus, Grozny, the second Grozny Grozny. battle. करेंगे, मौका मिल गया. Sandeep, what is Israel's end game in Gaza invasion? Will they hold the place, sir? That's what The I end would game, ask. like I said, is to destroy the Hamas. Hamas's hold in Gaza. So, Ramesh Narayanan ji asks, how can we overcome the current challenges in the Middle East to stop Pakistan and China advantage and carry forward the IMEC program? Ramesh ji, IMEC program. Is it there? Do we know what it is? What exactly, how is it actually getting actualized? किसने ड्राफ्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाए हैं? कौन कौन कैसे कैसे करेगा? कहाँ कहाँ जाने वाला है? क्या है? अभी तो बस ट्रीटी साइन हुआ है और लोग सोच रहे हैं कि आईमेक कल तैयार हो गया है. ऐसे नहीं होता है दादा. आईमेक कब बना है? अभी कंसर्न्ड कंट्रीज विल मेक आउट देयर डीपीआरस एंड अदर थिंग्स कि किस तरह से क्या क्या कर सकते हैं. अभी किसी ने कुछ बोला ही नहीं है. पीपल हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि वो अंदर जाएगा थ्रू द पर्शियन गल्फ एंड वहां से पोर्ट के थ्रू जाएगा, क्योंकि आज के तारीख में हमारा वहां जाता है. विल आईमेक गो फ्रॉम देयर? if you're wanting to avoid Iran, why will you go into the Persian Gulf at all? आपके पास एक ओमान में भी पोर्ट है. दुकम पोर्ट है, वहां से भी जा सकता है. तो अभी तो आपका पूरा खुलना है अगले 2-3 साल में. कौन कैसे करना है, क्या करना है, तो 2-3 साल के अंदर तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. लाइक आई सेड, इट कैनॉट बी अ लॉन्ग ड्रॉन वॉर. इट हैज टू बी अ शॉर्ट स्टॉप शार्प वॉर. सो challenges have always been there. The option that has been given to all the whole lot of West Asian countries is that you will benefit economically and it will be better for your people. And so all these countries are प्रेफरिंग आईमेक ओवर बीआरआई. बीआरआई तो देख लिया है कि भाई साहब डेट आ जाएगा और चाइनीज फ्लड कर जाएंगे हमारे इलाके में. हमको नहीं चाहिए वो. तो लेट्स सी. Will Israel literally flatten Gaza and rebuild with IMEC funds? Why would you want to build it Too with far IMEC off. funds? The सदर्न आईमेक फंड से कोई गाजा वाजा बनने नहीं वाला. जिसको गाजा बनाना है वो तो कतारी और इनको बोलेंगे पैसे डालो और बनाओ. I don't think any Anglo-Saxon or the Western country is going to give any money to Gaza to build it. They gave so much money, क्या build किया उन्होंने? हमास को build किया. I was looking more towards the north. How much of the central is going to do, I don't know, because the Israelis would prefer a depth. Then all along the border, how much of the area will they make it like a demilitarized zone, that you don't come in here? Till how much depth? वो ज़्यादा नहीं कर सकते ना. 11 किलोमीटर ही तो maximum depth है. The Gaza Strip is not very wide. It is wider towards the south. Would And they it is also do it narrower. towards the ocean, sir? Pardon? Would they ओशन also ब्लॉक do it? तो आप वैसे भी कर सकते हो. नहीं, आप ओशन का लिटरली जी ब्लॉक आपने करा हुआ है, फिर भी वो जो आके वो स्मगलिंग डंप्स और ये सब करते छोटा हैं मोटा लोग. तो आप सी, अगर आप उसको डीमिलिटराइज भी कर दो ओशन को, हाउ आर यू गोइंग टू कीप इट डीमिलिटराइज? No, लैंड you को तो फिर भी आप कर सकते हो. come into the beach and reduce it from there also. Will that be an option? असॉल्ट फ्रॉम द बीच, लैंड सी एयर तीनों तो मैंने बोला हुआ है कि नाउ दे हैव टू मेक अ चॉइस हाउ दे आर गोइंग टू ऑर्केस्ट्रेट, एंड दे विल यूज ऑल लैंड सी एंड एयर, all three So you basically verticals. reduce the beach access. आप 300-400 मीटर वहां पे ले लेते हो, which becomes a demilitarized zone. नहीं, अगर आप 400 मीटर लेके, लाइक आई सेड ना, डीमिलिटराइज करो, how do you observe? You can't be sitting there. If you're sitting there, then what is the logistic support that you have? You have to look at overall costs. You don't want to antagonize the Palestinian other people. No? It is just the Hamas that you are targeting. Interesting. You know, when you really, आपका military mind थोड़ा it clears up a lot of things, I must say.
Thought provocator, thank you so much. He says, do we emphasize more on cheaper low tech alternatives which could be used on a larger scale, easier and quicker to resupply, hacking proof? ऐसा नहीं है. Just because if it's a cheaper technology, then there will be a lot of loopholes within it which can be utilized by the enemy. It's not that. You will need on at various levels. See, induction of technology is not high-end technology at all levels. At the ground level where the soldier is working, it has to be at the level of uh, tactical, technical IQ of that soldier. Hmm. I'm bringing in a big word. Otherwise, it's called how technology savvy is that man to be able to grasp it. Only then he can use that weapon system properly. Otherwise, that weapon system will not be used and it's pointless. At the next higher level, they need, certainly they will be having tech savvy people because handpicked people बैठते हैं वहाँ पे. You need higher level of technologies as you go higher. Because they'll people who are sitting there are handpicked, technologically trained, they are savvy, they have a technical bent of mind, and they'll be able to grasp everything and be able to pass the orders. So please remember, when you go in high-end technology, that doesn't seed in right down to the bottom. That's honestly, sir, today's show has been, for me, it's honestly, personally, it's been crazy learning because I've been reading and military blogs में पढ़ता रहता हूँ, एक चीज उधर, एक चीज उधर, एक चीज. I think you've brought everything together and बड़ा clear हो गया. I'm again and again saying this. Thank you. I think this was very, very needed show. Technology Hubs, thank you so much. He says, will Europe accept BRI or they will reject it? सबने रिजेक्ट कर दिया यार. इटली आंटी तो छोड़ के भागी. सबने रिजेक्ट कर दिया. अभी ग्रीस एक बचा हुआ है. जब आपका हाइफा बन जाएगा, वो ग्रीस भी प्रेयस आपको दे देगा. So, Nishant Gupta ji, he says, how good is our artillery manufacturing capability? Very Yeah, good. let's keep it on the subject, yeah. It's I think, very sir, good. thank you for the answer. Vignesh Prabhuji, thank you so much. He says it's not the right time for Bharat military to take Chinese occupied areas, show the military diplomacy to the world. Is it not the right time? Vignesh ji, military diplomacy doesn't mean going to war. Military diplomacy is totally different. When I go and occupy Chinese area, you're asking me to go to war with them. Why? Military diplomacy is use of your military in a diplomatic way where you help that country, you gain a lot of faith and support from them, you provide them the weapons, the training, everything. Okay, that is military diplomacy. Military diplomacy is not going to war. Sandeep Nayak ji says Joe Biden's 9/11 warning to Israel: don't repeat U.S. mistakes in rage face. I think okay, there was a symbol. It doesn't come properly here. Rage face, Don't- orange biting. नहीं नहीं Yeah, वो नहीं they're वो नहीं not going that's in anger. icon, so They're not it going in doesn't anger. read on this Anger तो program है, properly. but So he says proper plan करके जा रहा है इजराइल. I've lost your video again, Aadi. बीच बीच में तेरा वीडियो फ्रीज हो जाता है. I don't know, somebody is attacking my internet. So I've got a 75 Mbps internet, so it should not happen. And this is just for my system. बाकी सब अलग है. So, so चाइना तेरे पीछे पड़ा है, पता कर ले उस बंदे से, कोई चाइनीज चीज तो नहीं है उसके अंदर. हाँ मेरे को नहीं मेरा कुछ भी चाइनीज नहीं है सर इसके अंदर. तो my laptop is also, मैंने देखा था, made in USA है वो, assembled also in USA है. तो it is not a No, Chinese one. assembled में भी where are the subsystems come from? That is important. सर आप डरा रहे हो Shankar अभी ji, मैं. firstly, they can keep propagating the BRI till the cows come home.
But that the BRI has made so many countries, put so many countries into economic jeopardy cannot be hidden. मैं काउंटर क्यों करूं? People will laugh at them. Let these anti-Israel experts go to Sri Lanka and try and sell this BRI to them. जला देंगे लोग उनको. Minimum. Yeah. Minimum, sir. And last question we'll take, sir. Shubham Sharma, he says, there are few countries who are considered to be behind the war to kill IMEC. But I feel if it was actually to kill IMEC, the biggest beneficiary is Turkey. यार दिस वाज नॉट आईमेक, प्लीज शुभम. 2 साल से प्लानिंग चल रही है इसकी. ये तो आईमेक कहीं था ही नहीं. इट वाज basically planned by the Chinese to push the Americans and to show to the Americans that two can play the same game and they can do something in the Muslim world. Unfortunately, they didn't realize that the kind of people they were making their bed with, especially Hamas. तो आईमेक तो इंसिडेंटल है, एंड लाइक आई टोल्ड यू बिफोर आल्सो यार, आईमेक को खुलने में तो टाइम लगेगा यार. अभी तो ट्रीटी साइन हुआ है, उसके बाद देन यू विल डिसाइड कि करना क्या है. जैसे I2U2 साइन हुआ, उसके 1 साल बाद आपने यूएई के साथ साइन किया ना. यूएई आपके साथ क्या क्या करेगा क्या नहीं करेगा, अभी तक खुला है, वो शुरू हुआ है उस पर काम. अभी काम धीरे धीरे शुरू होगा उसके ऊपर. उसी तरह से आईमेक से यू हैव टू डिसाइड ना. आईमेक कट्स बोथ वेज ना. इट्स नॉट जस्ट इंडिया, दूसरे साइड से भी आ रहा है. क्या है, व्हाट विल बी द कॉन्टूर्स, कहाँ जाएंगे, कौन जाएगा, कैसे जाएगा, रेल में कैसे जाएगा, कौन सा गेज होगा रेलवे लाइन का. यू आर गोइंग थ्रू मल्टीपल कंट्रीज. अगर रेल से जा रहे हो, do all countries have the same gauge or is the gauge different? Same है. किसने डीपीआर बनाना पड़ेगा, कैसे लेके जाओगे, क्या लेके जाओगे. how many will you take it like what we had made our freight corridor वासुकी, 2.5-3 किलोमीटर लंबा डबल डेकर, जो 400 कंटेनर्स एक ट्रेन में लेके जाता है. वो तो खुलने में टाइम है. तो आईमेक क्यों रो रहे हो? दिस इज अगेन अ चाइनीज नैरेटिव. एग्जैक्टली, थैंक यू सर. चाइनीज क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, आईएमएफ का और बीआरआई का कोई कनेक्शन ही नहीं है. दिस इज द लेटेस्ट चाइनीज नैरेटिव. पहले बोलते थे आईएमएफ इज थ्रेटनिंग द बीआरआई, नाउ दे टर्न अराउंड एंड सेड नो 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 नो, आईएमएफ डज नॉट. एंड हमारे भी देश में काफी सारे मैंने देखे हैं एनालिस्ट, सडनली दे आर स्टार्टिंग टू, नहीं नहीं नहीं, वो बीआरआई तो नॉर्थ जा रहा है, हम तो इस तरफ जा. नॉर्थ जा रहा है? हाँ, आर्टिक सर्कल में जा रहा है ना, नॉर्थ पोल से होते हुए जाएगा. मैरिटाइम ट्रेड रूट कहाँ से जा रहा है? सबसे मैं एक चीज बता दूं, मतलब अगर किसी को ज्यादा इस चीज के बारे में, सर विद योर परमिशन टेक 30 सेकेंड्स. चाइना का जो डिजिटल सिल्क रोड है ना, उसमें 2 कंट्रीज हैं सबसे आगे. एक है यूएई, देयर आर 45 प्रोजेक्ट्स, एंड द सेकंड पार्ट इज गेस हु? इजराइल with 42 projects. So a lot of people are now, the Chinese wanted to hurt Israel ताकि वो यूएसए को थोड़ा तंग कर सकें. ठीक है, that is something that I've been also saying. But अगर कोई ये सोचता है कि चाइनीज के इंटरेस्ट में है ये वॉर आगे जाना क्योंकि आईमेक को खतरा हो जाएगा, चलो आईमेक तो डब्बे में डाल देते 5 सेकंड के लिए उसको, जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट. चाइना के जितने डिजिटल सिल्क रोड के प्रोजेक्ट्स हैं ना इसराइल में, बाय बाय. वो तो ऑलरेडी हो गए. देयर सो मच ऑफ फ्यूरी अगेंस्ट द चाइनीज because it has come out that the Chinese were helping the Hamas and doing all the planning. There's fury today, rising fury in Israel against China, and they are openly saying that they have backstabbed us. Yeah, I'll take this last one. Thank you so much, thought provocator. He says, "I'm a गांव बसानी लुटेरे पहले आके खड़े हो गए." This is my favorite dialogue, sir. ये बहुत बड़ा. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. This is my personal favorite dialogue. मैं जो को मेरे को तंग करता है ना, हमेशा बोलता हूँ यार गांव तो बसने दो, बाद में आना. लुटेरे ही आगे पहले. Sir, I must say, last बार ही बोलूंगा, but I must say, guys, I think all of you will agree, and please, please, please mention this in the comments. ये military tactics की military analysis was critical. We've been doing geopolitics till now. I think this is the first time
with sir, we've gone into the military aspect of it. And I'm grateful to sir that sir ne time nikala apart from our weekly schedule. And it is amazing that we've understood. मेरे को तो बहुत कुछ clear हो गया, and I'll be able to actually think about this battle very differently. Thank you so much, sir. It's always a pleasure. And would you Thank believe it? On you. a Thursday working afternoon, we still had 18, 1900, almost 2000 people watching us. So it tells Thank you you. something. Thank you. Thank you, Thank you so much, Shrotagan. sir. Thank you. Thank you. Thank Jai you. Hind, Jai Bharat. Jai Bharati.